ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपना अच्छा नाम भी कमा सकते हैं, साथ में अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। यदि आपके पास कुछ हिडन टैलेंट हो, उसको वीडियो बनाकर ही नहीं पर कुछ लिख कर भी आप करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं और घर बैठे अच्छी आमदनी भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम सीखते हैं इंटरनेट के ऊपर खुद का ब्लॉग कैसे बनाएं। वेलकम यू ऑल इन Balushaeducare। इन दिस वीडियो वी लर्न ब्लॉग क्या है, न्यू ब्लॉग कैसे क्रिएट करें, फ्री ऑनलाइन ब्लॉगिंग कैसे करें, टिप्स एंड स्टेप्स फॉर ब्लॉग राइटिंग, फॉर्मेट, स्ट्रक्चर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लॉग राइटिंग, marking scheme and one live example which will be very useful for the class 10, 11, 12 for the board exam. So dear friend, why are you waiting? Let's start your own blog today. Start with blogging. Blogging is kind of a diary we used to write every day with title and content of our day-to-day life. Blog. क्या है? Blog is a regularly updated website or web page typically run by an individual or small group. ये kind of website है और kind of web page है जो खुद आप चला सकते हो या ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आके भी चला सकते हैं। ब्लॉग इज एन ऑनलाइन जर्नल, आर्टिकल और इंफॉर्मेशनल वेबसाइट। ब्लॉग is a platform where a writer or a group of writers share their views on an individual subject. एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वहाँ पे राइटर्स और ग्रुप ऑफ राइटर्स किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। एंड इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन इन द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। द लेटेस्ट पोस्ट अपीयर फर्स्ट एट द टॉप। जिस तरह से हम सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालते हैं तो आप जो भी पोस्ट डालोगे तो आपको टॉप में दिखाई देगी, उसी तरह से सेम ब्लॉग इज वर्क लाइक जीमेल। Select a topic, write, include an image, proof plus edit, and publish and promote. These are the 5 quick steps you can start your own blog on internet. Like blog तैयार करने के लिए गूगल में जीमेल का अकाउंट होना जरूरी है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में आपको www.blogger.com पे जाइए, क्रिएट योर ओन ब्लॉग पर क्लिक कीजिए, गूगल अकाउंट पासवर्ड से लॉगिन कीजिए, फिर नए पेज पर टाइटल which is known as शीर्षक दीजिए और ब्लॉगर एड्रेस तैयार कीजिए। इससे आपका ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा। खुद का ब्लॉग आपका विदिन 10 मिनट में आप आपका खुद का ब्लॉग तैयार कर सकते हो और साथ में साथ लोगों के साथ पहुंच सकते हो, खुद भी क्रिएटिव बन सकते हो और अर्निंग भी कर सकते हो। Now this will be tutorial. Now see, given below is list of blogging sites which are the free, www.blogger.com and www.wordpress.com. These are the 2 websites. Here you can create your own blog. Let's connect with Balushaeducare and watch the video till the end. If you are the student, you need to write blog writing as a writing skill for 4 months. We will see the marking scheme, format, structure, steps, and one live solve example of blog writing. Dear friends, this is a tutorial about how to start your own blog. On Google, just type www.blogger.com. Will be interface of Blogger website where you need to create your blog. So once you click create your blog, sign in with your account. So for this, you need to put your email ID with password. Here you need to name your blog. So आपके ब्लॉग का नाम क्या होना चाहिए? आपके नाम से भी आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो या किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर भी ब्लॉग बना सकते हो। So let's start. We are junior college student. Your custom domain और यहाँ पे
आपको कस्टम डोमेन देना है जो आप जिसको भी शेयर करोगे इस नाम से आने वाला है. So the same name we will put. Let's see. This blog address is available. Sometimes it is show that this address is not available, so we need to change and think for alternate. Here, yes, you can write your name. I will write my name. Start writing your new post. While creating new post, here put the title. Students interest in online class. Okay, or classes. So this will be title. Here you will write in detail about how you used to interest, how students are attending the class, really whether they are interested or whatever they learn via this 10 months since corona pandemic started, whether they understand or not. So you can write your own views on this topic. With this, here you can insert your image, maybe your class photo, maybe your Zoom meeting photo. Otherwise you can insert your videos also, and you can, for more livable, you can use this emojis also. Okay, fine. After this you are going to start with and now here you can see the preview of your blog post and how your blog will look like. And so we have just started, so your blog will look like this only, and then come to the next. And here you can start with just check it once again, read it aloud. Dear friend, while writing the blog, you should not copy images, videos or any data from others blog, because it may be possibility of copyright claim. And the second thing, it's your own blog, so your own information should be there. तो अच्छा ब्लॉगर बनने के लिए आप सपोज इसके बारे में ब्लॉग लिख रहे हैं, स्टूडेंट इंटरेस्ट इन ऑनलाइन क्लासेस, तो उसके बारे में आप 4-5 ब्लॉग लिख सकते हो, वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो और उससे आपके खुद की ओपिनियन बना के खुद के लैंग्वेज में यहाँ पे आप ब्लॉग लिख सकते हो. ब्लॉग आप हिंदी में भी लिख सकते हो, मराठी में लिख सकते हो, खाली लैंग्वेज जो भी आप लैपटॉप या मोबाइल यूज करें उसमें से चेंज होनी चाहिए या उसमें फॉन्ट होना चाहिए. एंड देन हियर यू कैन स्टार्ट विद द पब्लिश द blog. Just I will just publish the blog. This will publish this blog and confirm. We just confirm this, publish the blog. Now see dear friend, here the post. Whatever you publish now or before, here there will be, you can see the post in this area, then states, then comments. जिससे भी आप ब्लॉग शेयर कर रहे हो सोशल मीडिया से, जो भी लोग कमेंट करेंगे आप यहाँ से उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, उनको रिप्लाई भी दे सकते हैं. अर्निंग वाया ब्लॉग, यू कैन अर्न अ गुड इनकम. ओके, सो क्रिएट एडसेंस अकाउंट. यहाँ से आप लॉग इन करके गूगल के थ्रू आप 1 महीने में इसका आपको अप्रूवल आ जाता है. उसके बाद आपके ब्लॉग पे ऐड आनी शुरू हो जाती है, उससे आप अर्निंग भी कर सकते हो. इन दिस सेक्शन देयर विल बी पेजेस, यू कैन अटैच योर वेरियस पेजेस ऑन द सेम. यहाँ पे लेआउट में means what kind of interface of your blog will be there. These are the just examples also here. And here the theme, most important part of your blog is theme. So you need to find out the theme. Here are the example sample themes is given, so you can choose any this kind of theme. And this you need to just click on अप्लाई. सो आपका जो भी ब्लॉग है उसके लिए थीम अप्लाई हो जाएगी. उसके बाद देन नेक्स्ट सेटिंग है, यहाँ पे जाके आप अपना ब्लॉग का टाइटल चेंज करना हो कर सकते हो, बॉडी लैंग्वेज कर सकते हो. फिर उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी है, देन उसके बाद डेट कौन से फॉर्मेट होनी चाहिए, ये आप सब यहाँ से जाके चेंज कर सकते हो. देन इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, ये आपको करना है ताकि आपका ब्लॉग किसी ने भी जूनियर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस पे गूगल पे डाला तो आपका ब्लॉग गूगल में रैंक करना जरूरी है. रीडिंग लिस्ट में आप
बहुत सारे ब्लॉगर्स को भी यहाँ से फॉलो कर सकते हो और आपके रिलेटेड आपको यहाँ पे ब्लॉग मिल जाएंगे। और इस तरह से ये आपका आप ब्लॉग व्यू कर सकते हो। माय ओन ब्लॉग बालूशा एजुकेयर in Google search. So my pleasure to see my blog. I literally enjoy writing a blog. Recently, I just put post of my experience, and here also you can see here are the certain posts, whatever I like, whatever I feel, I am sharing via this blog. If you want to connect with me, just in Google search, just search via Google Balushaeducare, and I hope you will also enjoy blogging as I started enjoying. Stay tuned, stay connected with Balushaeducare. Let's see importance of blog. Blog is an easy way to express yourself. ब्लॉग के माध्यम से आप खुद इजीली एक्सप्रेस हो सकते हो किसी भी टॉपिक के बारे में या किसी भी इंसिडेंट्स के बारे में। ब्लॉगिंग कनेक्ट्स योरसेल्फ विथ लाइक माइंडेड पीपल। ब्लॉगिंग से आप आपके सिमिलर व्यूज पीपल से कनेक्ट हो सकते हो। ब्लॉगिंग enables you to easily establish yourself as an expert in your field of interest. ब्लॉगिंग से आप आपके खुद के इंटरेस्टिंग फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हो। एंड देन इट इज similar to Facebook where we can post images, videos, etc. Blog is kind of a Facebook based post. वहाँ पे हम images, opinion और videos भी share कर सकते हैं। Via creativity, you can create your own blog within tips for blog writing. These are the few steps. Plan your blog post by choosing topic. आपको एक टॉपिक लेके ब्लॉग पोस्ट का प्लान करना है। न्यू अट्रैक्टिव टाइटल, उसी को रेलेवेंट कैची टाइटल देना है। देन ड्राफ्ट कंटेंट विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन यूजिंग इंट्रोडक्शन, लीड एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ। जो मिडल का कंटेंट है उसको इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, मिडल पैरा होना चाहिए एंड देन कंक्लूडिंग पैराग्राफ भी होना चाहिए। यूज इमेजेस वेरेवर पॉसिबल। एज आई टोल्ड यू, like blog is work like Gmail, blog is work like Facebook. So यहाँ पे आप images या videos भी upload कर सकते हो। Edit before posting, check words, paragraphs, footer and size. Posting करने से पहले सोशल मीडिया पे शेयर करने से पहले आपको ब्लॉग पोस्ट अच्छी तरह से एडिट करनी है। मीन्स स्पेलिंग, वर्ड्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, पैराग्राफ, फुटर, फॉन्ट साइज सब देख के फिर आपको ब्लॉग पोस्ट करना है। ये फ्यू स्टेप्स है जिससे आप अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। नाउ दिस विल बी स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉग। दिस इज ब्लॉग स्ट्रक्चर। हियर हेडर विद द मेनू और अ नेविगेशन बार। यहाँ पे हेडर रहेगा उस नेविगेशन बार के साथ। मेन कंटेंट विद फीचर और लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट। यहाँ पे मेन कंटेंट रहेगा विद टाइटल और विद इंट्रो, मेन पैराग्राफ। दोस्तों, दिस इज ब्लॉग स्ट्रक्चर। हेडर, हियर आपके ब्लॉग का नाम आएगा। फिर मेन कंटेंट में जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं उसका टाइटल, विद इंट्रो, heading paragraph, concluding paragraph with images, videos, anything you can share here. Sidebar with social profile, favorite content और call to action. यहाँ पे आपकी खुद की प्रोफाइल रहेगी तो सोशली लोग आपसे कनेक्टेड हो सकते हो। Similar minded people, similar interested people can connect with you and footer यहाँ पे। Now this will be structure of blog. This is blog structure. Here header with the menu और a navigation bar. यहाँ पे header रहेगा उस navigation bar के साथ। Main content with feature और latest blog post. यहाँ पे main content रहेगा with title और with intro, main paragraph. दोस्तों, this is blog structure. Header, here आपके ब्लॉग का नाम आएगा,
मेन कंटेंट में जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं उसका टाइटल, इंट्रो, रीडिंग पैराग्राफ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ विद इमेजेस, वीडियोस, anything you can share here. Sidebar with social profile, favorite content और call to action. यहाँ पे आपकी खुद की प्रोफाइल रहेगी जो सोशली लोग आपसे कनेक्टेड हो सकते हो. Similar minded people, similar interested people can connect with you. And footer यहाँ पे terms and conditions of blog. This is format you should use while writing, blog writing skill in your answer sheet or in your notebook. This format you should need to draw in your answer sheet. Okay, first of all, write the title with your name or with your blog post name if you have the blog. Then blog content, definitely you should start with introduction, middle paragraph and concluding paragraph. यहाँ पे आपको जब भी आप आंसर शीट में लिखते हो इस तरह का फॉर्मेट आपको ड्रॉ करना है. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. सी बेनिफिट ऑफ ब्लॉगिंग टू स्टूडेंट. डियर फ्रेंड्स, since last year for class 11th and 12th, blog writing is writing skill for the examination. What are the benefits of blogging to the students? We will see. Blogging exercise student creativity. Student की creativity का exercise हो जाता है blogging के माध्यम से. Blogging से student की creativity बढ़ती है. रेगुलर राइटिंग शार्पन द ब्रेन परफॉर्मेंस. आप रेगुलर लिखते हो, जिस तरह से आप डायरी में खुद का एक्सपीरियंस लिखते हो उस तरह से आप ब्लॉग पोस्ट पे रेगुलर पोस्ट कर सकते हो. उससे आपका ब्रेन परफॉर्मेंस बढ़ता है. किसी भी ओपिनियन के बारे में, टॉपिक के बारे में आप आपका खुद का एनालिसिस कर सकते हो. प्रमोट एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ. आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो. मेनी टाइम्स व्हाट हैपन, वी कांट एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, राइट? व्हाट पीपल विल से, समबडी लाइक और डिसलाइक, बट यहाँ पे आप खुद को, सेल्फ को एक्सप्रेस कर सकते हो. देन ब्लॉगिंग बूस्ट कॉन्फिडेंस. ब्लॉगिंग से आपको आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल. ऑफ मास इन द एग्जामिनेशन. Blog writing, 4 marks writing skill, main content 2 marks, header, menu, navigation bar 1 marks, footer 1 marks. So 4 marks writing skill, you should spend minimum 10 minutes and max to max 15 minutes, not more than this, because English we need to write more things because question paper is very big. So minimum 10 minutes, max to max 15 minutes you need to spend on writing. Dear friend, here we will see one live example of blog writing. My blog, here is, I have given one example how to write the blog. The title of blog is China Strategy by Balushaeducare. Here, introduction paragraph, then middle paragraph and then concluding paragraph. If you want, you can take the screenshot also. Okay, dear friend, I hope you understand how to create your own blog on internet and how to write blog as a answer sheet to get good marks in the examination. So, dear friend, stay tuned with the Balushaeducare